relations? When you have a connection between two persons, the same we use for maths also. In my maths, you have done Cartesian product. You must be knowing Cartesian product. What is a Cartesian product? What is a Cartesian product? When we do a mapping between two sets, this is one set, this is another set. Suppose here I have A, B, C, D. This side I have 1, 2, 3, 4. Now for Cartesian product, what will we do? We will connect A with every element of B. This is set A, this is set B. So this is an ordered pair set. Cartesian product is always ordered pair. So we will write A1, A2, A3, A4. Then B1, B2, B3, B4. Same way it is for C and D. D1, D2, D3, D4. These are ordered pairs. But we didn't say here that they are connected. We have just taken two values and made the ordered pair according to that. So when we talk about the relation, we establish any connection between them. Connection or any rule between them. Now, for example, you say A is equal to B square, or B is equal to A square, or B is equal to A plus 1, or B is equal to A plus 4. Anything like that, we will say we have established a connection. So if I draw this, A is equal to, it will be square root. Let us take B is equal to A square. So if I draw the mapping of this, here it is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Here it is again 1, 2, 3, 4, 5, 6 till 36. Suppose I have taken. So what will you do? B is square of A. So this is 1. This is 2 is related to 4. 3 is related to 9. So and so on, and 6 is related to 36. Means we have made one relation which is a set 1, 1, 2, 4, 3, 9, 4, 16. So and so on. Last is 6 and 36. Right? So we have made one connection of set A to the element of set B. Now you will see all the elements of B are not connected with A. So the first element we said domain. The second element is range. And the set B is codomain. This is already we have done in class 11. Right? If you give some nodding or something, then I'll get to know that you are listening or you are understanding or I'm audible. Yes, ma'am. Yeah, thank you. Thank you. Who is this? Aydin Wakas. Okay. So the relation is when we establish one connection between the elements of two sets. Right? In maths, it is very simple. Just according to the rule, you can make the relation. So if I take B is equal to A plus 1, what will be R? Anyone? If A is 1, what will be B? 2? 1. 2. A plus 1 plus 1, 2, na? Oh, you're talking about the relation. It's okay. Yeah, this one. This one. Let me take it as... Just a minute, bache. Let me make it side. Yeah. I'm talking about this relation. This one. B is equal to A plus 1. So what will be the relation now? 2 and 3, 3 and 4, so and so on. 6 and 7. Yes. Right?
And if I take B is equal to A plus 4, then R will be 1, 5, 2, 6. Last will be 6 and 10, right now? This is the relation. Now, how many types of relations are there? We have 3 types of relations right now, which we will discuss to make it an equivalence relation. First is reflexive. There is one question in miscellaneous exercise of class 11 NCERT. If you have done AA, AB, BA, and this is reflexive, then symmetric, then transitive. If we establish these 3 relations, then we will say that the relation is equivalence relation. Which relation? Equivalence relation. What is it? Reflexive. When I establish the result with myself only, I am making some relation here like 1, 1. This 1, 1 is the relation with itself only. Elements are same. Here 3, 3. Sorry, this is 2, 3. Sorry, this is 2, 3. No, my mistake. A is equal to B. Where? No, not A is equal to B, beta. That is wrong. I'll not take the second element. B will become second element. Establish relation with myself only. A with A. Like example, if I say relation is 2 persons are living in the same society. Suppose this is a relation. So I live in the same society as I live in. My relation with myself only. Not with any other person. A, B, B, C, C. I'll not take A, B, B or like that. Understood? Yes, ma'am. I can't change the relation with another person. I have to establish the relation with myself only. Like congruency, a triangle is always congruent to itself, similar to itself, not with any other triangle. Reflexive is when the relation is between itself only, with itself. Right? Symmetric is when A is related to B, then B is also related to A. We write it like this. A is related to B, or AB is an element of R. There are 2 ways to write this. That AB is an element of R means relation, or A is related to B. Any way you can write. Then we have to show that B is also related to A, or BA is an element of R. This is called symmetric. Triangle 1 is congruent to triangle 2. Isn't triangle 2 is also congruent to triangle 1? Right now? Yes. Similarity. If triangle 1 is similar to triangle 2, so triangle 2 is also similar to triangle 1. Now, Ramesh and Suresh lives in the same society. So if Ramesh lives in the society of Suresh, Suresh also lives in the same society of Ramesh. Na? So this is symmetric. Next is transitive. When A is related to B, B is related to C, then A is related to C. Example, triangle 1 is similar to triangle 2. Triangle 2 is similar to triangle 3. So isn't triangle 1 similar to triangle 3? Yes, ma'am. Same is for congruency also. Right? So first reflexive is when we establish the relation with myself only. I'll say I live in the same society as I live in. Second is if I live with the society of Suresh, Suresh also lives in the same society as me. So this is a vice versa relation. Third, A lives in the society of B, B lives in the society of C, so A lives in the society of C. This is the relation. I'm telling English relation, not mathematical relations right now. Right now, society is just a English relation only, right? You study in the same school as B, so B also studies in the same school as you study, na? So that is symmetric. If you take 3 persons, then it will be transitive. So all the 3 are true, then we will say the relation is an equivalence relation. But there is one contradiction also for this, which I'll tell you later. Is this clear? What is reflexive? What is symmetric? What is transitive? Now, if you check the first question, okay, there is one null relation. Null relation means there is no element in the set.
And universal relation, if all the elements are there. Okay, these two are there. Now if you check the first question, this is your NCERT I have taken. First question, if you see, what is A given? 1, 2, 3, 4, 5, 6 up to 14. Right? R relation is, what is R relation given? 3x minus y is equal to 0. How will you read this? How will you read this? R is a relation of xy such that 3x minus y is equal to 0. We will read this expression as like this. So what will I say? What is R? If I take x as 1, what should be y? 3. 3. Right, very good. If I take 2, 6. very good. If I take 3, 9. yes, 4 and 12. After that, I can't establish, right now? Now, first I'll check, is it reflexive? What means reflexive? With itself only. Means any Yes. element No, of... it is not reflexive. Yeah, because 1, 1, 2, 2, 3, 3 till 14, 14 should be there. But it's not there. So it is not reflexive. So if they ask you, justify, what will you say? It's not reflexive. No, that is they have asked. But if they say, justify your answer. Suppose it is in 2 1, mark 1 question. not belongs to R. Because yeah, you can say there is no element such as 1, 1, 2, 2, an element of this, because all the elements should be there. It's not like that 1 or 2 only. If there are 14 elements, 1 to 14, then all should be there. If even single one is missing, suppose 1 to 14 is there, 1 to 12 is there, 13 and 14 is missing, still it is not reflexive. Clear? Yes. Second, is it symmetric? No. No, ma'am. Why? Because 1, 3 is there, but 1, 3, 1 is not. 3 belongs to R. 1 is but related not to 3. 1 is not Yes, belongs but to R. 3 is not related to 1. So it is not symmetric. Transitive? No, ma'am. No, it is not transitive. Reason? 1, 3. 1, 3 belongs to R. 3, 9 belongs to R, but not 1, 9 Yes. One belongs to R. 1, 9 doesn't belong to us. Yes, it says 1 belongs to 3, 3 belongs to 9, but 1 doesn't belong to 9. Right? So, not transitive. Now, I was talking about one condition. Now, listen to this carefully. Suppose if I omit this relation from here, this is not there. I have just 1, 3, 2, 6 and 4, 12. Then I'll say this is transitive. Why? Listen to this condition very carefully. If the condition of transitivity, what is the condition of transitivity? A related to B, B related to C, na? AB is there. But B is not coming at the first place in the second, in this one. Then the condition doesn't arise. Check. 3 is coming at first place anywhere? No, ma'am. 6 coming? No. 12 No, coming? no, ma'am. So condition of transitivity is not there. So it will be transitive. Clear? Is this clear? Yes, If the ma'am. condition of symmetric as well as transitive, symmetric as well as transitive is not there, then still they are symmetric as well as transitive. Suppose I have given you 3 elements. I'll say make the smallest relation in this. That will be 1, 1, 2, 2, 3, 3. This is an equivalence relation. This is reflexive. Symmetric condition, Yes, 1, 2, 2, 1 is not there. Transitive condition is not there. So still it is equivalence relation. Understood? Yes, ma'am. Is the condition clear? That even if the ma'am. condition of symmetric or transitive is not there, in other question it will be more clear. We will say it is transitive, it is symmetric. Okay? Next, question number 2.
Y is divisible by X. A is 1, 2, 3, 4, 5, 6. A is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. So what will be R? Y is divisible by X. So can you tell me what will be R? 2 1. No, start with 1. 1 divides every number now. See, Yes, ma'am. don't go random. Then you will miss one element. So we will start by the 1. 1 divides every number by the rule. So I'll write 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6. So 1 is done. Now check 2. By 2, which numbers are divided? 2 2, 2 2 4 4, 2 6, 2 right? Then with 3, 3 3 3 6. 3 3 with beta, 3 3, 3 Yeah, 6, yeah, 3 6. 4 4, 5 5, 6 6, right? Any number is left? Is any number left which we haven't taken? No, ma'am. So now first check reflexive. All 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 is there. Yes, ma'am. So R is reflexive. Then if 1 2 is there, if 1 2 is there, is 2 1 there? Oh, ma'am. No. So it is not symmetric, right? Yes, ma'am. So what will be the justification? 1 related to 2, but 2 is not related to 1, right? Transitive. Tell me transitive. Is it transitive? No, ma'am. Tell me. 1 2. Just check. 1 2. Where the next 2 2? So isn't 1 2 there? 1 2, 2 4. So isn't 1 4 there? No. Yeah, it's there. 1 4. Yeah, it's there. It's there, ma'am. Yeah. 1 2 2 6. Isn't 1 6 there? Check any number. 1 3 Ma'am. 3 3. 1 3 is there. 1 3 1 3 6. 1 6 is there. So it is transitive. It is reflexive. It is transitive, but not symmetric. Clear? Yes, ma'am. Any doubt? No, ma'am. Next one. Second one. Sorry, I missed it. Y is equal to x plus 5 and x is less than 4. So can you tell me what will be this? 1 and 5? 2 and 1 and 6, 2 and 7, 3 and 8. Now is it reflexive? Is it Ma'am, reflexive? No. I didn't get this one, ma'am. Pardon? नहीं समझ नहीं आया? नहीं मैम, नहीं आया. ठीक है, देखो बेटा आपके पास यहाँ पे क्या एलिमेंट्स गिवन है. एक तो नेचुरल नंबर है सारे, ठीक है. और अगर x को मैं 1 डालूंगी तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 + 5 6 ना. यस मैम. तो क्या बना फर्स्ट एलिमेंट? 1 6. दूसरा क्या बनेगा? अगर मैं x को 2 डालूंगी तो 2 + 5 7. यस. और तीसरा 3 and 8. और 3 x क्या है? 4 से छोटा होना चाहिए, तो 1 2 3 हुआ ना. यस मैम. आप देखो इसमें रिफ्लेक्सिव का कंडीशन है? नो मैम. हाँ, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है. सिमेट्री का कंडीशन है, बट 1 6 है, 6 1 नहीं है, तो सिमेट्रिक भी नहीं हुआ. ठीक है. ट्रांजिटिव का कंडीशन है? नो मैम. है No. बेटा, देखो वो 6 कहीं पे फर्स्ट नंबर पे आ रहा है 1 6 है बेटा. 1 6 है, बट 6 7 और 8 कहीं पे फर्स्ट प्लेस पे आ रहा है. नो मैम. हाँ, तो No, ये no. ट्रांजिटिव है. मैंने आपको पीछे क्या बोला?
अगर कंडीशन ही राइज नहीं होगी तो वो ट्रांजिटिव होगा। अब देखो ये 6 को रिपीट होना चाहिए फर्स्ट प्लेस पे, ए बी बी सी, तभी कहते हैं ना हम ट्रांजिटिव होता है। यस पर मैम। मेरी ये बीसी वाली कंडीशन कहीं लग रही है? नहीं ना, मैम 6 तो अगर कहीं। वो हाँ मैम अगर वो ए बी बी सी और सी ए नहीं होगा तो वो ट्रांजिटिव ही नहीं होगा ना। हाँ, अगर ए बी बी सी है और ए सी नहीं है तब ट्रांजिटिव नहीं है, बट यहाँ तो बी सी नहीं है ना मेरे पास। मैम इनमें से कुछ भी नहीं है तो भी ट्रांजिटिव होगा। हाँ, वही मैं आपको बोल रही हूँ। देखो, आपको क्या चेक करना है, जब आपके पास ए बी आया ना तो आप सेकंड एलिमेंट उठा लो और चेक करो कि फर्स्ट प्लेस पे आ रहा है या नहीं आ रहा। दिस इज द बेस्ट वे टू चेक। आपका जो सेकंड एलिमेंट है उसे चेक करो कि वो फर्स्ट प्लेस पे आया या नहीं आया। आया कहीं पे 6? नहीं आया। 7 आया कहीं पे फर्स्ट प्लेस नो पे? मैम। नहीं। 8 आया? नो मैम। नहीं। तो नो मैम। कंडीशन ए बी बी सी वाली अराइज ही नहीं हुई। जो हम ए बी एंड बी सी कहते हैं ना, वो अराइज ही नहीं हुई, बी सी यस। है ही नहीं, तो ये ट्रांजिटिव है। समझ आया? यस मैम। तो ये ना रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है, बट ये ट्रांजिटिव है। क्लियर? ओके। यस मैम। अगला, फोर्थ वाला, x माइनस वाई इज एन इंटीजर, तो r क्या बनेगा? किस पे डिफाइंड है? इंटीजर्स पे। फोर्थ पार्ट, x माइनस वाई इज एन इंटीजर। अब ये वाला आपका जनरल रूल से होगा, इसको आप उससे नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ले लो रिफ्लेक्सिव, तो मैं क्या लिखूंगी? x रिलेटेड टू x, तो क्या हो जाएगा? इंप्लाइज x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 इज एन इंटीजर। ट्रू है ना ये? Yes. 0 is an integer, which is true. Therefore, relation is Reflexive. R is reflexive. ये जनरलाइज्ड रूल में लिखना बेटा आपने, ये उसमें नंबर से मत कर देना ये वाला क्वेश्चन। सिमेट्रिक, x रिलेटेड टू y है, तो x माइनस वाई इज एन इंटीजर, तो मैंने m ले लिया इंटीजर। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ माइनस वाई माइनस एक्स, दैट इज ऑल्सो m, और y माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एम, सो इजंट इट दिस इज ऑल्सो इंटीजर। 2 अगर इंटीजर तो माइनस 2 भी इंटीजर है ना। Yes, ma'am. तो y is related to x, therefore r is symmetric. क्लियर? सिमेट्रिक में आपको हमेशा b को पहले लाना है और a को बाद में लेके जाना है। वही हमने किया, देखो y को पहले लाए, x को पीछे कर दिया। अगला है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या करेंगे? a x रिलेटेड टू y, y रिलेटेड टू z, तो मेरे पास क्या हो गया? x माइनस वाई इज इक्वल टू m, एन इंटीजर, y माइनस z इज इक्वल टू n, m n वहां पे मेंशन जरूर करना कि इंटीजर है। तो मेरे पास अगर मैं दोनों को ऐड करूंगी तो क्या आएगा? x माइनस वाई प्लस वाई माइनस z इज इक्वल टू m प्लस n। y से y कैंसिल हो गया। मैम आपने हाँ जी बेटा। y माइनस जेड है। हाँ बेटा z है, y रिलेटेड टू z है ना। मैम आपने प्लस लिखा है वहां पे नहीं नीचे। बेटा, माइनस लिखा है। अच्छा यहाँ पे, सॉरी। अच्छा ठीक है, समझ गई मैं आप कहाँ बोल रहे हो, समझ गई मैं। थैंक यू। बोल माइनस ही रही थी, वो ध्यान नहीं दिया। राइट, और m प्लस n क्या हुआ? इंटीजर ना। यस मैम। देयरफॉर x इज रिलेटेड टू z, देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव। क्लियर? यस। सो अच्छा, एक और चीज, जब आप फाइनल में बोर्ड में क्वेश्चन लिखते हो तो मार्किंग स्कीम में हमेशा लास्ट स्टेटमेंट का मार्क्स होते हैं, तो आप क्या लिखोगे? एज r इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देयरफॉर इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये लिखना जरूरी है, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे, एंड में पूरा नहीं मिलेगा। ठीक है, R यस is
एन, क्योंकि हमें एक बार काटा हुआ है मार्क्स बच्चों का। क्या हुआ? जस्ट ए मिनट, बोर्ड वो हो गया। जस्ट ए मिनट बच्चों। तो वो हमारा हो गया क्या? रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अभी फटाफट से नेक्स्ट वाला चेक करते हैं। अभी आपको ये कुछ क्वेश्चंस देखना, देखो यहाँ पे देखो, एक्स एंड वाई वर्क इन द सेम प्लेस। सो रिफ्लेक्सिव में क्या होगा? एक्स एंड एक्स वर्क इन द सेम प्लेस, राइट ना? ट्रू ना? एक्स अपने साथ ही काम करेगा ना। अगर एक्स एंड वाई वर्क इन द सेम प्लेस, वाई एंड एक्स ऑल्सो वर्क इन द सेम प्लेस। एक्स एंड वाई वर्क इन द सेम प्लेस, वाई और जेड वर्क इन द सेम प्लेस, सो एक्स विल वर्क इन द सेम प्लेस एज जेड। तो ये दो क्वेश्चन सेम हो गए, लोकेलिटी वाला भी और सेम प्लेस वाला भी, राइट? यस तीनों हो गए ना, ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, ये दोनों क्वेश्चन। इक्विवेलेंट। हाँ, ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अगला देखो, एक्स अपने आप से 7 सेंटीमीटर टॉलर हो सकता है? आप अपने नो आप को मैम। बोल सकते हो कि मैं अपने आप से 7 सेंटीमीटर बड़ा हूं? नहीं ना, तो नो नॉट मैम। रिफ्लेक्सिव। अगर एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है तो वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर छोटा हुआ ना। तो अगर एक्स यस मैम। रिलेटेड टू वाई है तो वाई इज नॉट रिलेटेड टू एक्स। समझ आया कैसे? अब यस मैम। अगला, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, वाई जेड से 60 सेंटीमीटर बड़ा है, तो एक्स जेड से कितना बड़ा हुआ? 14 सेंटीमीटर ना। यस मैम। यस मैम। तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ, ठीक है? तो ना नो ये मैम। रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। अगला देखो, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। एक्स अपनी वाइफ हो सकता है? एक्स इज ए वाइफ ऑफ एक्स हो सकता नो है? मैम। तो नो मैम। रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है? यस ट्रांजिटिव, सॉरी ये सिमेट्रिक। एक्स वाई की वाइफ है तो वाई तो एक्स की वाइफ हो नहीं सकता ना, क्योंकि वो मेल हो गया, नहीं। तो यस सिमेट्रिक नो भी मैम। नहीं है। ट्रांजिटिव चेक करो, एक्स इज वाइफ ऑफ मैम वाई। ट्रांजिटिव भी नहीं है। है है ध्यान से देखो, मैं तुम्हें क्या बोला? कंडीशन। मैम एक्स देखो, अब मैं बता रही हूँ कैसे है। एक्स इधर दिया है मैंने। एक्स वाई की वाइफ है, वाई वाइफ बन सकता है किसी की? नो मैम। हाँ, तो वाई तो फर्स्ट नंबर पे आएगा ही नहीं ना। हमें क्या चेक करना है कि वाई फर्स्ट नंबर पे आ रहा है या नहीं। वाई तो कहीं पे भी फर्स्ट नंबर पे नहीं आएगा, नो मैम। तो ये ट्रांजिटिव है। ध्यान रखो, ओके। ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन जहां कहाँ पे गया, सेकंड वाला। क्यों ट्रांजिटिव है? क्योंकि कंडीशन ही राइज नहीं हो रही है। कंडीशन कौन सी होती है कि अगर मैं ए बी बी सी बोल रही हूं, तो अगर ये बीसी वाला नहीं है, अगर ये बीसी वाली कंडीशन नहीं है वहां पे, तो आपका ट्रांजिटिव है। अगर ये कंडीशन ही नहीं है, क्योंकि बी को मेरे को फर्स्ट प्लेस पे आना चाहिए पहले। तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे कोई एग्जांपल ले लो, रेखा इज वाइफ ऑफ सुरेश। सुरेश वाइफ हो सकता है किसी की? नहीं ना, तो सुरेश फर्स्ट प्लेस नो पे मैम। आएगा ही नहीं। तो जब वो फर्स्ट प्लेस पे नहीं आएगा, तो ट्रांजिटिविटी कंडीशन ही नहीं बनेगी बीसी वाली, तो ट्रांजिटिव है रिलेशन। ध्यान रखना ये। क्या अगर ओके। जस्टिफिकेशन आती है तो क्या लिखोगे? द कंडीशन ऑफ ट्रांजिटिविटी ए बी बी सी डजंट अराइज, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। क्लियर? यस मैम। अगला है, एक्स इज फादर ऑफ वाई। तो इसमें क्या होगा? एक्स कैन बी फादर ऑफ इटसेल्फ? नहीं ना, नो। नो। तो रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। एक्स वाई का फादर है, तो वाई क्या हुआ? सन हुआ ना, तो यस सिमेट्रिक भी मैम। नहीं हुआ। अब एक्स वाई का फादर है, वाई जेड का फादर है, तो एक्स फादर उसका जेड का ग्रैंड फादर हो गया ना, यस मैम। यस मैम। तो ये तीनों ही नहीं हुआ। समझ आया? यस। यस मैम।
क्लियर है ये? यस। यस। अब आगे जो आपका ये सेकंड क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, इनइक्वेलिटी के। इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे। अभी तो ये टाइम खत्म हो रहा है, लेस देन 1 मिनट हो गया। तो मुझे तो आज ये था कि फर्स्ट क्लास में कैसे होगा क्या नहीं होगा, तो अगली क्लास जो भी होगी तो हम ये एक्सरसाइज करेंगे। अभी आपके पास अगर है तो मैं एक और लिंक भेज देती हूँ, अगर आपको आगे करना है तो। हेलो। Yes, ma'am, you can send. So, ओके, आई एम सेंडिंग द लिंक।